morning guys, welcome back to the channel. Today we are at HDT Customs and why am I here आपको तो already पता है, जब आपने टाइटल पढ़ लिया होगा. It's a concept issue जो हम हिमालयन ओनर्स को फेस करना पड़ता है. How did I resolve it? What did I do? All this is in the vlog. I hope you guys enjoy this video. बने रहिए end तक and enjoy this video. So let's get on to it. The bike is getting ready for preparation and Bittu is setting it up on a stand. So guys, front wheel निकल चुका है. As you guys can see, the process has already started. This is Hemant bhai, as you guys already know. तो मैंने बस हेमंत भाई को फ़ोन किया था. मैंने उनको बोला कि ऐसा कौन से का इशू है, मुझे उसको रिजॉल्व करना था. सो आई ब्रॉट माई बाइक ओवर हियर एंड द प्रोसेस इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. इट्स क्वाइट अ प्रोसेस जो सिर्फ जिन लोग को आता है वही कर सकता है. एंड HDT कस्टम से और कोई मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं करता इसके ऊपर. सो आई एम हियर फॉर द सेम. सो गाइज, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. हर एक पार्ट अलग अलग से निकाल के रखना पड़ता है. फ्रंट व्हील इज रिमूव्ड, फॉक्स आर रिमूव्ड. अभी बस बेरिंग निकालने के लिए जो बीक होता है वो भी निकालना पड़ेगा. एंड जो पुराने बेरिंग्स ऑलरेडी है, हमारे स्टॉक बेरिंग्स जो रॉयल एनफील्ड से होते हैं, वो निकालने हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन. आई विल बी guiding you through the processes and we'll see what happens. So guys, this is how the bike looks now. सारे front forks निकाल दिए, wheel निकाल दिया, and this is how the bike looks from down under. एकदम खलास हो गए सब bearings and it was giving me a lot of problems while steering, so I had to get this problem fixed. So guys, now the handlebar is about to be taken off. With the entire setting has to come off. ये पूरा का पूरा setting बाहर आ जाता है and I'll show you guys how it looks from the top. I think थोड़ा grease भी सब है अभी भी. रॉयल एनफील्ड का जो उन्होंने कुछ grease लगाया था was still there, but this is how it looks. Guys, this is our T-stem of the Himalayan and one bearing is off. This is the other bearing. अभी बस इसको निकालने की देरी है and once this is removed, the other ones will be, the new ones will be installed. So guys, this is one of the hardest parts in the concept changing process. ये वाला जो bearing है वो बहुत ही जमा हुआ होता है. सो इसको निकालने के लिए ना ये bearing को तोड़ना पड़ता है. That is what you see Bittu is doing over here. He's trying to get the bearing loosened, but वो हो नहीं रहा है. And वो जब नहीं हो रहा था तो he had to break this. So this is how it is broken. एक बार ये bearing टूट गया, you are at the ring. इसकी आगे के प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ. सो होता क्या है ना, टू वंस द रिंग इज एक्सपोज्ड, वो रिंग को निकालने के लिए at HDT Customs they have this one method. Instead of going on knocking at the bearing and getting the T-stem damaged or something, to avoid that एक छोटा सा कट वो रिंग के ऊपर ऐसे रखना पड़ता है कि वहाँ से वो रिंग टूट सके. So that is what is Bittu doing over here. He's trying to put in one small cut over there and the ring should come off after that. So guys, we are at the
final part at which the ring that is attached to the T stem has to be removed. Now, as you can see, हम लोग ने cut भी रखा था, but by cutting that bearing also, there was a lot of effort that was needed. बहुत मेहनत करनी पड़ी वो रिंग को तोड़ने की. ऐसा आप देख सकते हो. ही इज़ ट्राइंग, वो बेचारा ट्राई कर रहा है उसको तोड़ने की. कहाँ कहाँ से अपने क्या वो चिजल एंड हथौड़ी लेके तोड़ने की पूरी कोशिश में है. बट इट इज़ ब्रेकिंग, टूट रहा है, बट धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में टूट रहा था. एंड बहुत सारा मेहनत करना पड़ा तोड़ फोड़ करने के लिए. मैंने भी कुछ हाथ मारे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वॉज होल्डिंग द कैमरा आफ्टर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया. बट देन या दिस इज़ हाउ वी ट्राइड एंड वी गॉट हाफ द रिंग ऑफ द टी स्टेम. सी एज यू कैन सी, this is how thick the ring is, and it's tough. गाइस बेरिंग्स पूरे निकल चुके हैं एंड अभी हम बस वो जो नए बेरिंग्स है, जो TNN के बेरिंग्स है जो AOM से मैंने ऑर्डर किए थे, वो बेरिंग्स को हम लोग ग्रीस कर रहे हैं विद द वाटरप्रूफ ग्रीस विच वॉज अवेलेबल विद द किट दैट केम टू मी फ्रॉम आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स. उनका किट पूरा सब चीज़ से इक्विप्ड आता है. एंड अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है. आप लोग वहाँ पे जाइए. आपको अगर कोई ऐसा इशू है, यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर फ्रॉम them. As you can see, it's a complete box. छोटा सा ऐसा box दिया था which was full of the grease. And yeah, this is how the bearing is off. This is the T-stem के अंदर भी grease काफ़ी है उसका. And Bittu is trying to grease every part of that bearing because that is very important. सिर्फ ऊपर से करने से नहीं होता. वो grease actually अंदर तलक जाना चाहिए into the bearing. The bearings should be completely greased from top to bottom. Every curve, every bit of its circumference, everything has to be greased properly so that installation में कोई problem नहीं आए. So guys, proper greasing के साथ हम लोग ने bearing को लगा दिया है. The new bearing is all ready and set on the T-stem. We are greasing it as much as possible. वो करना बहुत ज़रूरी है because it helps in smooth movement of the bearing. And wear and tear तो of course avoid करता ही है. It increases the life of the bearing as well, क्योंकि waterproof grease है, वो पानी को obviously उसके पास जाने नहीं देता. एंड हमारे स्टॉक बेरिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है is what I have also heard. I know many of you have already experienced it because you guys might be using it on your bikes. और ये कुछ ऐसा दिखती है हमारी बाइक अभी भी till everything gets back onto the bike. And yeah, we are all set. सो गाइज एज यू कैन सी, ऊपर का बेरिंग सेट हो चुका है. अभी ये नाइलॉन कैप उसके ऊपर से लगती है और जो टी स्टेम है वो नीचे से इंसर्ट किया जाएगा. वंस द टी स्टेम इज इंसर्टेड, दिस इज द लॉक नट दैट एज यू कैन सी, ये भी ऊपर इस नाइलॉन कैप के ऊपर से लगेगा एंड इट विल लॉक एवरीथिंग इन प्लेस. सारा चीज़ ग्रीस किया जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर द बाइक. Guys, bearings लग चुके हैं बाइक्स में. The new bearings have been installed. Bittu is just locking everything back in. ये last part है, the lock nut which I told you about. ये एक बार लग जाता है, उसके बाद you just have to tighten everything properly and everything is set. So I'd like to take this moment to thank HDT Customs for helping me install this. I'd like to thank AOM Art of Motorcycles for sending out these parts and getting it delivered to me ASAP when I ordered it. Great products guys, and सारा issues हमारे resolved हो चुके होंगे, I hope so. So guys, I hope you enjoyed this small vlog which I had made for the cone set issue that I faced on my Himalayan. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please definitely like the video, subscribe to the channel if you are new to the channel, and share this video with your friends, family, your close ones. There are a lot of vlogs coming up, lot of interesting vlogs coming up, and with that said guys, be safe, take care of your family, and I think I'll see you guys in the next vlog. Tada, bye bye.